The Silent Bell Tower, Khamush Ghanti Wala Minar. In the heart of the forgotten town of Eldervale stood an ancient bell tower, its stones weathered and cracked from centuries of rain, wind, and whispers. भूली बसरी बस्ती एल्डरवेल के बीचों बीच एक कदीम घंटी वाला मीनार खड़ा था, जिसके पत्थर सदियों की बारिश, हवा और सरगोशियों से घिसे और छिल चुके थे. The bell inside had not rung in over 100 years, not since the townspeople had sealed it off after the disappearance of the tower keeper's daughter. अंदर मौजूद घंटी 100 साल से नहीं बजी थी, तब से जब से गांव वालों ने इसे बंद कर दिया था, जब मीनार के निगहबान की बेटी गायब हो गई थी. 12-year-old Elia had always been fascinated by the tower. 12 साला एलिया हमेशा से इस मीनार से मुतासिर रही थी. Her grandmother, who once worked as the village historian, spoke of how the bell used to chime at sunrise and sunset, when thus guiding fishermen on the nearby river and warning of approaching storms. इसकी नानी, जो कभी गांव की मूर्खा थीं, बताया करती थीं कि ये घंटी तलू और गुरूब आफताब पर बजा करती थी, करीबी दरिया में माही गेरों की रहनुमाई करती और आने वाले तूफानों से खबरदार करती. One fog-drenched morning, Elia discovered an ornate key buried beneath a loose floorboard in her grandmother's attic. एक धुंध भरी सुबह, एलिया ने अपनी नानी की छत में एक ढेले तख्ते के नीचे एक नफीस चाबी दबी हुई पाई. It was heavy, carved with symbols that shimmered faintly in the light. Symbols Elia had seen etched into the tower's locked entrance. ये भारी थी, इस पर कुछ निशान कंदा थे जो रोशनी में हल्के से चमकते थे. वही निशान जो एलिया ने मीनार के बंद दरवाजे पर देखे थे. Driven by curiosity and a strange sense of destiny, Elia packed a satchel with a notebook, flashlight, and some bread and set out for the tower. तजस्सुस और तकदीर के अजीब एहसास से मजबूर होकर एलिया ने एक बैग में नोटबुक, टार्च और कुछ रोटी रखी और मीनार की तरफ रवाना हो गई. As she reached the gate, the key slipped into the lock like it belonged there. जब वो दरवाजे तक पहुंची, चाबी ताला में ऐसे फिट हुई जैसे वो इसी के लिए बनी हो. With a soft click, the rusted door creaked open. एक हल्की सी आवाज के साथ जंग आलूद दरवाजा चरचराते हुए खुल गया. Inside, the air was cold and stagnant, filled with the scent of old paper, iron, and dust. अंदर की हवा सर्द और बासी थी, जिसमें पुराने कागज, लोहे और गर्द की बो बसी हुई थी. She climbed the spiral staircase slowly, her fingers grazing the stone wall, steadying her breath. वो आस्ता आस्ता घूमती हुई सीढ़ी चढ़ी, इसकी अंगुलियां पथरीली दीवार को छू रही थीं, और वो अपनी सांस को संभाल रही थी. Strange murals covered the tower's interior, paintings of hooded figures ringing the bell, each with a pair of glowing eyes. मीनार के अंदरूनी हिस्से पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने हुए थे. सर पर कपड़ा ओढ़े शख्सियात की तस्वीरें जो घंटी बजा रही थीं, और इन सब की आंखें चमक रही थीं. At the top, she found the great bell, suspended by thick, frayed ropes. ऊपर इसे एक बड़ी घंटी मिली जो मोटी और घसी हुई रस्सियों से लटक रही थी. Beside it was a wooden desk covered in ink bottles, parchment, and a faded journal titled Keeper of the Sound. इसके बराबर में एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर स्याही की दवातें, पुराने कागजात और एक पुराना जर्नल रखा था, जिस पर लिखा था आवाज का निगहबान. She opened it. The handwriting was shaky but legible. उसने इसे खोला. लिखाई कांपती हुई मगर काबिल फहम थी. The bell does not chime with metal and rope. It listens for silence. Only then will it speak. घंटी धात और रस्सी से नहीं बजती. ये खामोशी को सुनती है. सिर्फ तब ही ये बोलती है. Beneath the writing was a charcoal sketch of a girl. Elia froze. The drawing looked exactly like her. तहरीर के नीचे कोयले से बनी एक लड़की की तस्वीर थी. एलिया ठटक गई. वो बिल्कुल इस जैसी दिखती थी. Suddenly the wind outside ceased. Not a bird sang. Not a leaf rustled. अचानक बाहर की हवा रुक गई. ना कोई परिंदा चहचहा रहा था, ना कोई पता हिल रहा था. The silence was so absolute, so deafening, that her heartbeat seemed loud in her chest.
खामोशी इतनी मुकम्मल, इतनी गूंजदार थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कता महसूस होने लगा. Then the bell moved. फिर घंटी हली. It didn't ring. ये नहीं बजी. It hummed, a low, melodic vibration that echoed deep into the town below, waking long-forgotten memories. ये गुनगुनाई एक हल्की मध्यम थरथराहट जो नीचे बस्ती तक गूंजी और पुरानी भूली हुई यादें जगा गई. Lights flickered in windows. The cobblestone streets glowed faintly with patterns that had been invisible for a century. खिड़कियों में रोशनियां चमकने लगें. पथरीली गलियां हल्की रोशनी से जगमगाने लगें, जिन पर सदियों से छुपे नमूने अब नुमायां हो गए. The humming stirred something else. ये गुनगुनाहट कुछ और भी जगा गई. From the shadows of the bell chamber emerged a figure, a translucent woman in a flowing dress, her face kind and familiar. घंटी वाले कमरे के साए से एक शख्सियत भरी, एक शफाफ औरत जो बहते लिबास में थी, इसका चेहरा नरम दिल और मानूस था. Elia, the woman whispered, you've heard the silence, now listen to the truth. Elia, औरत ने सरगोशी की. तुमने खामोशी को सुना है, अब सच्चाई को सुनो. Elia felt a warmth in her chest, like she belonged here. Elia के सीने में एक हरारत उठी, जैसे वो यहाँ की ही हो. The woman revealed she was the original bellkeeper's daughter, trapped between worlds when the last bell sounded during a forbidden ritual gone wrong. इस औरत ने इंकिशाफ किया कि वो असली घंटी के निगहबान की बेटी थी, जो एक गलती से की गई ममनुआ रस्म के दौरान दो जहानों के दरमियान फंस गई थी. Only someone with a pure ear, a rare gift Elia had inherited, could undo it. सिर्फ कोई ऐसा जिसके कान खालिस हों, एक नायाब सलाहियत जो एलिया को विरासत में मिली थी, इस जादू को तोड़ सकता था. That night, guided by the woman's spirit and the journal, Elia rang the bell properly for the first time in generations. इस रात औरत की रूह और जनरल की रहनुमाई से एलिया ने नस्लों बाद पहली बार घंटी को सही तरीके से बजाया. The sound was not just a chime, it was a story, a song, a bridge between past and present. ये आवाज सिर्फ घंटी की नहीं थी. ये एक कहानी, एक नगमा और माजी व हाल के दरमियान एक पुल थी. As dawn broke, the townspeople emerged, unaware that they had been living in a muted world, disconnected from their history. जैसे ही सुबह हुई, गांव वाले बाहर आए, इस बात से बेखबर कि वो एक खामोश दुनिया में जी रहे थे, जो इनके माजी से कटी हुई थी. Flowers bloomed, colors brightened, and time itself seemed to breathe easier. फूल खुलने लगे, रंग निखर गए, और वक्त खुद जैसे आसानी से सांस लेने लगा. Elia had awakened the town, not just with sound, but with remembrance. Elia ने गांव को बेदार किया, सिर्फ आवाज से नहीं, बल्कि याद से भी. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the heart of the forgotten town of Eldervale stood an ancient bell tower, its stones weathered and cracked from centuries of rain, wind, and whispers. The bell inside had not rung in over 100 years, not since the townspeople had sealed it off after the disappearance of the tower keeper's daughter. 12-year-old Elia had always been fascinated by the tower. Her grandmother, who once worked as the village historian, spoke of how the bell used to chime at sunrise and sunset, guiding fishermen on the nearby river and warning of approaching storms. One fog-drenched morning, Elia discovered an ornate key buried beneath a loose floorboard in her grandmother's attic. It was heavy, carved with symbols that shimmered faintly in the light, symbols Elia had seen etched into the tower's locked entrance. Driven by curiosity and a strange sense of destiny, Elia packed a satchel with a notebook, flashlight, and some bread, and set out for the tower. As she reached the gate, the key slipped into the lock like it belonged there. With a soft click, the rusted door creaked open. Inside, the air was cold and stagnant, filled with the scent of old paper, iron, and dust. She climbed the spiral staircase slowly, her fingers grazing the stone wall, steadying her breath. Strange murals covered the tower's interior, paintings of hooded figures ringing the bell, each with a pair of glowing eyes.
At the top, she found the great bell, suspended by thick, frayed ropes. Beside it was a wooden desk covered in ink bottles, parchment, and a faded journal titled Keeper of the Sound. She opened it. The handwriting was shaky but legible. The bell does not chime with metal and rope. It listens for silence. Only then will it speak. Beneath the writing was a charcoal sketch of a girl. Aaliyah froze. The drawing looked exactly like her. Suddenly, the wind outside ceased. Not a bird sang. Not a leaf rustled. The silence was so absolute, so deafening, that her heartbeat seemed loud in her chest. Then the bell moved. It didn't ring. It hummed. A low, melodic vibration that echoed deep into the town below, waking long-forgotten memories. Lights flickered in windows. The cobblestone streets glowed faintly with patterns that had been invisible for a century. The humming stirred something else. From the shadows of the bell chamber emerged a figure, a translucent woman in a flowing dress, her face kind and familiar. "Aaliyah," the woman whispered. "You've heard the silence. Now listen to the truth." Aaliyah felt a warmth in her chest, like she belonged here. The woman revealed she was the original bellkeeper's daughter, trapped between worlds when the last bell sounded during a forbidden ritual gone wrong. Only someone with a pure ear, a rare gift Aaliyah had inherited, could undo it. That night, guided by the woman's spirit and the journal, Aaliyah rang the bell properly for the first time in generations. The sound was not just a chime, it was a story, a song, a bridge between past and present. As dawn broke, the townspeople emerged, unaware that they had been living in a muted world, disconnected from their history. Flowers bloomed, colors brightened, and time itself seemed to breathe easier. Aaliyah had awakened the town, not just with sound, but with remembrance. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी साथ यहाँ तक रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।